So class, our next topic is audit evidence. Now we saw that audit planning also had a standards on auditing 300. The same way audit evidence का standard कौन सा है? Audit evidence का standard is 500. So ऐसे 500 deals with the audit evidence. My dear students, please make this standards, there are only few standards which are there in the auditing in your portion. So make sure that you thoroughly do all the standards on auditing, wherever it is applicable. हमने जैसे audit planning में किया था, अभी और second one is in the audit evidence. So you have to be very much thorough with the standards on auditing. Now class, what is before this looking to the definition of the audit evidence, पहले हम ये देखते हैं that what is a basic duty of an auditor. ऑडिटर का बेसिक काम क्या है? टू गिव द ओपिनियन. सो बेसिक ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इज जस्ट टू गिव एन ओपिनियन, बट ही विल बी गिविंग द ओपिनियन ऑन व्हाट? He will be giving the opinion on the final accounts of the concern, correct? Okay, whether it's showing the true and fair view or not. तो वो किसके ऊपर देना है उसको? He will be giving the opinion on the final accounts of the concern. Now इसका जो ओपिनियन होगा, दैट ओपिनियन विल बी बेस्ड ऑन द एविडेंस विच इज बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट. ऑब्वियसली ना, हमें अगर कुछ ओपिनियन बनाना है तो हम किसी एक चीज को बेस लेके ओपिनियन बनाएंगे. द सेम वे द ऑडिटर व्हेन ही नीड्स टू give his opinion, he will be taking the evidence as a base which he has obtained during the course of an audit. So let's see now what is audit evidence. So audit evidence means all the information used by an auditor, वो सारी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर ने यूज की होगी इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, on which the auditor's opinion is based, and depending upon that the auditor must have given the opinion. Okay, so again, what is an audit evidence? It is all the information which has been used by an auditor in arriving at the conclusion on which the auditor's opinion is based. Clear? Now अभी जो auditor needs to obtain the evidence in the respect of कौन कौन से चीजों के बारे में उसको ये proof लेके आना है, तो he needs to take the evidence regarding the internal controls के उसका company का internal control कैसा है. Like see here only I'm giving you the internal points, like the auditor should ascertain that internal control exists in the concern or not. पहले तो उसको ये देखना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं. सेकेंड, ही नीड्स टू चेक कि वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट. अगर है, सपोज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है क्लाइंट के पास, तो वेदर जो भी एविडेंस ऑब्टेन होंगे फ्रॉम इट विल बी इफेक्टिव और नॉट. द थर्ड थिंग विच ही नीड्स टू नो इज दैट the evidence which has been collected by the auditor is actually relevant to this particular accounting year or not. If he is doing the audit for the 1920, तो जो भी एविडेंस उसने ऑब्टेन किए वो सारे एविडेंस वो करंट 1920 अकाउंटिंग ईयर के है या नहीं. सो इन द इंटरनल कंट्रोल ऑल्सो ही नीड्स टू सी द थ्री थिंग्स. फर्स्ट वन, एग्जिस्टेंस, के वेदर ये जो ऑडिट एविडेंस है, ठीक है, जो हमें कलेक्ट करना है, तो इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं. Second thing, whether it is effective or not, and the third point is whether it is operative or not. Actually ये सारे जो भी एविडेंस है वो अकाउंटिंग, ये रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर के ही कलेक्टेड है या नहीं. ठीक है. Now second thing, second evidence which he needs to obtain is the transaction. He needs to check the transactions during the year. Now in the transactions also he needs to see that whatever is the evidence obtained is proving that transaction or not. जो भी एविडेंस आपको मिला है उससे आपको ये पता चलना चाहिए कि हाँ ट्रांजैक्शन एक्चुअली में अकर्ड हुआ है. सो फर्स्ट ही नीड्स टू चेक द अकरेंस इन इट. सेकेंड थिंग विच ही नीड्स टू check in the transaction is कि whether the transactions are properly recorded or not. ऐसा तो कोई नहीं है ना कि कुछ unrecorded transactions हो, कोई unrecorded assets and liabilities हो, कुछ रिकॉर्ड करना रह गया हो. So he needs to check the completeness कि whether the transaction is properly recorded in the books of accounts or not, कि कुछ transactions omit तो नहीं हो गए. Then the third point which he needs to assure that कि जो भी एविडेंस मुझे मिला उससे मुझे ये अश्योरिटी होनी चाहिए कि अमाउंट्स जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे गए दैट दे आर द राइट अमाउंट्स. ठीक है. सो ही नीड्स टू
auditor should obtain the evidence, okay, to ensure what he needs to ensure that a transaction which has been recorded in the books is of a correct amount or not. And the fourth thing, he should obtain the evidence to ensure that the transactions is recorded in the books and it is properly disclosed in the financial account as per the proper accounting policies and the practices. Okay, so these are the four things why he needs to obtain the evidence from the transactions during the year. First, to check whether the occurrence is there or not of that transaction, then to check the completeness of the transaction, then to check the right amount, and the fourth one is to see whether there is a proper disclosure as per the accounting policies and the practices or not. Now the third point, balances of an assets and the liabilities at the end of the year. Now, auditors should obtain the evidence just to ascertain whether the जो भी assets and liabilities books of accounts में दिखाया गया है वो actually है या नहीं business में at the end of the year. हाँ, कि मे बी ऐसा भी हो सकता है ना पॉसिबिलिटी कि हमने कुछ एक्स्ट्रा असेट्स परचेज किए हो इन बिटवीन ऑफ द ईयर, हमने कुछ सेल कर दिया हो असेट्स को, कुछ लायबिलिटी को रीपे कर दी हो, तो दो completely there is a complete evidence regarding the same which has been given by the client to the auditor or not. Second thing, he needs to check, he needs to obtain the evidence just to ascertain that whether the assets are legally owned and the liability is legally owed by the concern at the year end. जो भी आपको assets दिखाया है वो आपके खुद के है, that is legally owned, OWNED I am talking about. एंड जो भी लायबिलिटीज है आप वो लीगली ओव्ड है या नहीं, आपको सच में किसी को देना है या नहीं. Then the third one, auditor should obtain the evidence just to ensure that the assets and the liabilities which are being shown in the balance sheet is stating the right value. इनकी जो वैल्यू है वो एकदम करेक्ट है. And he needs to see whether the disclosure of an assets and the liabilities which has been done in the balance sheet is as per the accounting policies and the practices. जैसे लॉ में हमें बताया गया है वैसे ही डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं. And always remember our class, the audit evidence which the auditor will be obtaining during the course of an audit must be properly sufficient, proper होना चाहिए. 100% वो आपको मतलब आप चेकिंग करके जो आपने ऑब्टेन किया होगा वो एक तो सफिशिएंट होना चाहिए, वो रेलिवेंट होना चाहिए जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सको, एंड इट शुड बी रिलायबल एज वेल. ठीक है, ऐसे ही मतलब हम देखो 100% तो हम कोई कंक्लूजन पर रिलाई नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम इतनी अश्योरिटी मिल जाए कि नहीं ये प्रॉपर है, हम इसके ऊपर इतना रिलाई कर सकते हैं, देन आल्सो इट वुड बी गुड. So these are the 3 points and we saw that even the internal points in this 3 are